नमस्कार दर्शक बंधु आज एप्रिल 6 तारीख आम समस्त को एप्रिल 1 रे आम उत्कल दिवस पालन करते तो तापर आम एपिसोडटा करुचु तेणु समस्त को आरंभ रे उत्कल दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा। एटा ये गोटे फोटो गोटे कलेक्ट करथिले बोधे व्हाट्सएप रे कोथरे आस्थिला। इट्स ए गुड विजुअल। तापरे बाकी आमे आउ केतरा जिनस विषय डिस्कशन करिबा लाइक recent movie Kashmir Files and ए बैगड कोन मूवी आस्थिला अजित एसएस राजामौली आरआरआर रोर राइज रिवोल्ट तो आमे से ए दुटा मूवी विषय रे डिस्कशन करबा ताकू छाड़े कि केतटा करंट अफेयर्स टर्म अछि लाइक श्रीलंका's इकोनॉमिक recession. It's a kind of not recession, I would say economic emergency. से सब जिन विषय में किसी डिस्कशन करबा एंड देयर आर फ्यू अदर पॉइंट्स। अजित कौन को देखंतु नमस्कार आज्ञा मोर नाम अजित दास ओडिसा रु आरआरआर फाइल्स Rise, Roar, Revolt is a fitting title since it is a fictional story inspired by the lives of freedom fighters Alluri Sitaram Raju and Komram Bhim। हाँ हाँ से दी जन साउथ इंडिया रो दी जन फ्रीडम फाइटर तो से मानकर लाइफ को बेस करके सेटा को टिके सिनेमैटिक आ टिके ये वी नो द टेस्ट ऑफ राजामौली मूवीज तो ताको टिके सिनेमैटिकली एनहांस करा है और किछि फिक्शनलाइज करा है बट यस दे आर बेस्ड ऑन टू ट्रू पैट्रियट्स से माने आर्म्ड रिवोल्यूशन करथिले तांको एरिया रे एंड यस नाउ कमिंग टू दिस सॉन्ग आरआरआर जो सॉन्ग टा अछि शोले Sholay, हाँ। You have seen that song? ना मु सेटा सुनिनी किंतु माने जो माने देखि के आसी कहि जंती सेटा बहुत हाईली कंटेम्पलेट हेछि बोली कहउ जंती माने अनुभव पूर्ण होइछ। ए गीतटारे से माने गोटे थीम शोले थीम रे करिसंती। शोले थीम माने लाइक छत्रपति शिवाजी मराठा शोले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजराती शोले एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता शोले। ए नेताजी मैटर नहीं कि ओडिसा रे कंट्रोवर्सी आस्थिला ए गीत रे कि why they credited Kolkata for Netaji, why did they ignore Odisha? Any view Ajit? तो सेटा नेताजी कर जन्म तो ओडिसा रे थिला किंतु सेता बेले सेटा बेंगल प्रोविंस रे थिला तेणु तांकर कटक रे जन्म ग्रहण करिथिबा नै बर्तन ओडिसा और बेंगल मध्य रे बाड़िया पीटा हवा छडा तो नेताजी होजन भारतीय। एटा हमर प्राथमिकता लोकन को परिचय देबा होछि कर्तव्य। तेणु ओडिसा बेंगल ए समस्त को छडा नेताजी जने भारतीय। तेणु समस्त मिलीमिशी नेताजी आउ जो अजित मो ए बिनसट को I understood your view but I reserve my view on this that is bit different
कि देख लेट मी गिव एन एग्जांपल जते बेले नेताजी 1938 रे जते बेले से छिड़ा हेथिले आई थिंक 39 रे दी थर 38 39 दी थर इलेक्शन हेतिला तो सेकंड टाइम जते बेले से छिड़ा हेथिले तांको अगेंस्ट रे एमके गांधी पट्टाभी सीतारामैया को छिड़ा करथिले तो से चाहूनଥିଲେ कि नेताजी प्रेसिडेंट हुअतु ताधरे आयरनी होची सॉरी आयरनी होची कि ओडिसा रु पट्टाभी सीतारामैया को अधिक वोट जाइथिला नेताजी को कम वोट जाइथिला मो पाखे से डॉक्यूमेंट अच्छे डॉक्यूमेंटा मो प्रोड्यूस कर देबी आउ से जिनसटा दैट डजंट से गुड अबाउट ओडिसा that you know Netaji was born there but why did you choose another person you never met, never saw, not born in your soil? Just only the thing is MK Gandhi is referring, that means Odisha had more influence for Mohandas Karamchand Gandhi during 1940s than Netaji. ताथरे प्रॉब्लम होची कोठी that now it is 2022 82 years after that event or 83 years after that event if we refer to 1939 जदि आमे से इवेंट को रिफर करिबा आज डेट रे भी अजित तमे देखो ओडिसा रे नेताजी से भली लोकप्रियता नहीं जो भली लोकप्रियता गांधी जी अच्छी बा अन्य मानकर अच्छी that is a big drawback तेणु जो जो गांधीयन माइंडसेट टा ओडिसा रे बहुत आगुरु जोटा ग्रो करथिला तो that is compounding day by day and today if we see that if Narendra Modi is coming to Kolkata on 23rd January 2021 and if RRR is acknowledging Netaji from Kolkata region, so that signifies that Odisha hasn't been able to make that appeal. से appeal हमें करी पारिनी। आ वर्तमान से जिनस गोटा को नहीं कि जदि हमें इश्यू करिवा कि नहीं एमती काहे के हला आफ्टर ओई गोटे जो भलिया मंजी लगेबो से भलिया गछ बाहरिबो गछ बाहरला तुम जो एमती कहीं गछ बाहरला वी हैव प्लांटेड इट वी हैव collectively earned it and let me be very clear on this fact जदि मते पचरा हुए कि who owns Netaji more between Bengal and Odisha I will vote for Bengal sorry I will say myself sorry I will say sorry to my Odia friends but and superiors but yes we have earned it yes this is the picture तो ओडिशा लोकमान माने जो नेताजी को नहीं राजनीति करूचंती सेटा छाड़ी की नेताजी कर प्रकृत भावमूर्ति को भल पाई तांकर गुप्त तथ्य को प्रकाश पाइबा पई आंदोलनात्मक मनोभाव राजनीति करियो खराब न बट से राजनीति रे गोटे वेटेज थिबा दरकार सब्सटेंस थिबा दरकार आ फांका राजनीति करले भल लागिबनी गोटे जिनस जिते बड़े डीप इनवॉल्वमेंट रहे तापर धर तू किसी मत पार्थक्य है कार किसी ओपिनियन आसला दैट इज वन पॉलिटिक्स अनदर पॉलिटिक्स इज कि भाई हम यहाँ पर बैठे हैं ओडिशा में नेताजी पैदा हुए थे और वहाँ पर आप लोग ऐसा करो वैसा करो भाई यू हैव टू क्लेम दैट ओनरशिप दैट ही वाज बोर्न इन 1897 दैट इज हिस्ट्री बट व्हाट नेक्स्ट व्हाट आफ्टर दैट से थिला बेले ओडिशा लोक तांको ओन करि नांते से जेते बेले आईएनए बनौथिले तांको महताब मना करथिले कि आपण रिबेल रूट रे जानतोनी आपण डिफेंस रूट रे जानतोनी ही वाज नॉट एनकरेज्ड एचके महताब को नेताजी आनी थिले कांग्रेस को
Being a big leader of Congress, he brought Mahatab to Congress. But later on tapare se kemiti kon sabu hella, he didn't get support from India, he didn't get support from Congress, also he didn't get support from his own state where he was born. Post 1945 Netaji disappeared. गोटे जिनस तुम कह कि हाव यू एवर हैड ठीक अच्छे नेताजी डिसअपियर करगले पर जो से गुनाई बाबा है कि आसिले यूपी को ओडिशा रो गोटे भी भक्त थिले जे भगवान जी को जाके देखा करते ना पवित्र मोहन राय जते बेले सी एस्केप कले सी कोणार्क थ्रू रे इंडिया को पसथिले ही वाज ए बेंगली ही एंटर्ड इंडिया थ्रू कोणार्क थ्रू ओडिशा बट आईनर ओडिशा रूट तांको कहीं अटेंशन देचंती कि ओडिशा रे आईनर तो ऑल ओवर इंडिया के अटेंशन देनांती सेम हैपेंड विथ ओडिशा जदी जदी आज धर तमे कहबो कि नाई से गीत रे कटक ना काई नि हलानी भाई जिनस अछि तम पारे एग्जांपल जदी थांता कि नाई आईनर सोल्जर आस्तिले आमे तांको कांध देथिलु कि आमे तांको सहाय थलु कि जहाँ भी हो have you supported INA soldiers no have you supported Netaji no did you support Netaji during his Congress presidential election no big no you made you wanted to get him defeated by Sitaramaya by voting more by giving more vote to Sitaramaya you have done that thing. And in last 8 years what is the convincing thing that the people of Odisha has done? Mission Netaji all over India, all over world, major countries se campaign kar sarchanti, they are yet to come to Odisha. गुमनामी मूवी सब जगह जो भाई रिएक्शन आसला ओडिशा से भाई किसी रिएक्शन आसी आई डोंट नो ना त्रिभाषी चलचित्र होता जदि ओडिशा लोक चाही था नेताजी जेहेतु ओडिशा जन्म होते ताको डबिंग कर पारथांते सेतेबेले तो कहीं बेंगलीज कंप्लेन कलेनि कि ओडिशा लोक कहीं डबिंग कलेनि सेतेबेले तो ସେମାନେ कहीं करेंगे ना ओडिशा बेंगली मूवी तैयार होची आमे भी ताको ओडिशा को आनिबा that spirit was not there. That is very unfortunate and ridiculous. आ एमानकर सेतिक बेले पेन हबो कि नाइ भाई 21 रे काहे कि मोदी सेठी की गले कि 22 रे काहे कि हमको गीत रे हम ना कहलेनी. Ownership comes with responsibility, and if that has missed then भाई जीतने का कौन कि गोटे रोगी को गोटे बेलपत्र जितना किए हो उतना ही मिलेगा. एटा गोटे आई थॉट टू शेयर हियर one person said about Netaji, he is all Bharat Mata and nothing else. M.N. Roy on Netaji Subhash Bose after meeting him, cited by H.N. Pandit, last stage of Netaji, 1993. Two prime faces, you can coin them as Bharat Mata. One is Rani Lakshmibai, Jhansi की Rani Lakshmibai. एपटे हाथ रे गोटे छुआ सेपटे खंडा धरिक लड़ाई करथिले. And another person is Netaji Subhash Chandra Bose. One man who didn't take anything from India but gave freedom to India. हाँ ये देयर इज वन मोर लॉजिक. देखो राजामौली एस राजामौली जे मूवी मेकर सी जिते बेले भी गोटे गीत थीम करिथिबे एमती नहीं कि से चिंता करन थिबे कि काहा को रखिबेनी. ही वाज एबल टू कीप द फेस ऑफ भगत सिंह, ही वाज एबल टू कीप द फेस ऑफ कंटेम्पररी कथा कहछि कि जो माने पाखा पाखी टाइम रे थिले. ही वाज एबल टू कीप द फेस ऑफ नेताजी.
he was able to keep the face of Sardar Vallabhbhai Patel. In the shadow of narrative, he deliberately ignores M.K. Gandhi. You just notice it. And even there is a case study. Lagara Munna Bhai was promoted by Bollywood. They wanted to show Sanjay Dutt in good light. Sanjay Dutt से ता पाखरे AK-47 कौन से जो टाड़ा से सब केस रे से फंसी की थिला तो एमने तार बहुत तार इमेज पे हो जा भी हो but that movie worked. It was a very successful movie. It had competition with Rang De Basanti once upon a time for Oscar nomination and fantastic movie, successful. तो इवन राजामौली भी चिंता करथियो कि भाई जदि मु एठी गांधी को न रखे भी हुए तो लोक मते रिजेक्ट भी करि परंते कंप्लेन भी करि परंते दैट इवेंचुअली हैपेंड मेनी पीपल कंप्लेंड बट द थिंग इज कि इफ यू make a movie about false narratives like Gandhi 1984 Oscar winning movie तो काली जदि गोटे रीजन पाए तमे याडू छाडू एनालिटिक रो मूवी बनौथिलो आई वोंट कंसीडर गांधी 1984 इज अ गुड मूवी यू कैन वॉच इट गांधी वाज अ ग्रेट मैन नो डाउट ऑन दैट बट दैट मूवी शोज वन साइड ऑफ गांधी नॉट द अदर साइड at least ignoring many other freedom fighters. आईएन रे 26,000 सोल्जर को डेथ हितला. This is not silly. I came across this YouTuber अशोक कुमार पांडे. तो मु तमको कहूतली बोधे मैं फोन रे कथा हितले. हां मते one of my close friend he suggested me that just take other analytics, not only Anudhar or Chandrajit Ghosh, take other analytics to get the complete view. Okay, give me. Then he referred me this man Ashok Kumar Pandey. He has written many books. It has good reviews. मु चेक कली मु चेक कला परे मु देखिली ए लोकटार नेताजी को ऊपर रिव्यू कौन व्यू कौन एंड टू माय सरप्राइज मोर टिके टिके डाउट थला मते सहजर तक काको विश्वास करिया कथा मोर टिके टिके डाउट होथला से लोकर पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर बट सी जो बही गुड़ाक कि नेताजी को बही पढ़ा से विषय से गोटे वीडियो बनई से वीडियो से मेंशन कर व्यू ए बही पढ़ नाउ टेल मी आज डेट रे जदि तुम नेताजी टॉप 10 बही ये करिवो रिफर करिवो काहा को नंबर 1 रखिवो कनुंड्रम अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष कर अनटोल्ड स्टोरी of inconvenient nationalist. These two books are fantastic books. So I would say the best book about Netaji. This man criticizes both the writers without taking their name. I guess both. At least we can say this man doesn't include these books and he includes the books of Sugata Bose. Sugata Bose written Majesty's Opponent 2006 से बहीटा को डेलिबरेटली लिखा था मुखर्जी कमिशन जोटा नेताजी को पई बसी थिला तांकर फाइंडिंग्स को डज करया पई तांकर फाइंडिंग्स को माने कोन कहंती गोटे न था कि गोटे इल्यूजन क्रिएट करे लगी दैट टू डाइवर्ट अटेंशन ही रोट ए बुक एंड दैट बुक रिजेक्ट्स फाइंडिंग्स ऑफ मुखर्जी कमिशन. Mukherjee was a Supreme Court judge and he refers him as a retired Bengali judge.
and the government sensibly rejects the finding. गवर्नमेंट किसका था? मनमोहन सिंह, UPA 2004. So when this man was backing those kind of writers, and we know how the family is encashing in the name of Netaji. So well, end of the story. And yes, he didn't include, this is #1 bestseller in colonialism imperial history. He didn't include 4-star, a 5-star book with 173. Now it is, I think, 250 ratings. Just see the kind of level of bias. I don't want to talk about India's first Prime Minister. We have some findings. So the lady is wife of George Kennedy, President of USA, ex-President of USA, and both Kennedy and Jackie Kennedy, the lady, they were not happy to share their experience with Netaji. Anyway, next is this is related to Sri Lanka. श्रीलंका रे लोक एबे लोक पारे गाड़ी नहीं, से माने शगड़ गाड़ी रे जास करूछंती. They don't have money. श्रीलंका रो करप्शन इंडेक्स होची 94. आउ इंडिया रो 2020 रो करप्शन इंडेक्स होची 86. 21 रो जणा नहीं, बट इफ यू चेक द ट्रेंड 78, 80, 86 might be 90. And you check the figure of 2012, 94, 94, 2012, 13, 14, just before Congress, before losing power. So different parties, different ideologies, but when it comes to second term, there is a similar pattern of behavior. When initially a government gets power, they are honest, at least they are better, but gradually they become overconfident, beat any party. आपण करप्शन रो सेफगार्ड पैरामीटर्स कोन कहि परिबे? सी एटा गोटे कोन एटा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, से माने एटा को बाहर करचंती. It is their data. मैं सेथ लगे स्क्रीनशॉट रिफर भी कर देची. बाकी I just came across and I wanted to share. I don't have much detail about it. Did you watch Kashmir Files? Kashmir Files, हाँ. देखलनी मूवीटा? ना देखि बेरे को सुजोग बा मिलेनी, कहीं ना जो दिन आमे जाइथिलु सेना पूरा हाउसफुल थिला. Ashok Pandey has criticized this movie. That this movie shows the half of the truth. So good ଜିନିଷ ଅଛି କି when you listen to a person for 5-10 minutes, you understand what he is about. Let us accept that everybody has an inclination. I won't say that I am not biased, even I am also biased, but yes, we should be able to deliver the logic of being biased. That's not that bad. मते मूवीटा भल लागिला. दिस मूवीटा सक्सेसफुल होवर गुड़ाए कारण अच्छी. One reason Anupam Kher is playing the role of his father, his actual father. He was a Kashmiri Pandit. So yes, this is one of his best role. And Mithun Chakraborty, great actor. And the new actor Darshan Pandit, fantastic actor. He went into depression
से जे मेन हीरो रोल जे करिछि यंग टोकाटा जे रोल करिछि he went into depression during the shooting. He was so much moved by the story. Even Vivek Agnihotri has cried and गोटे टाइम रे तांकर जो टीम थिला सन काश्मीर शूटिंग करथिले द टीम गेव अप कि ठंडा होचे आमे आ पारू नै टाइप रो सेंटिमेंट रहला विवेक अग्निहोत्री कन्विंस्ड देम दैट जस्ट इमेजिन के भलिया ठंडा राति रे से माने बाहर की जायथिबे छोट छोट छुआ को धरि की वर्षकर 2 वर्षर छुआ को धरि की अनप्रिपेयर्ड है कि आ हड़बड़ी रे जायथिबे केते कष्ट रे जायथिबे को भले हालत रे जायथिबे तापर पुणी जम्मू के जाएंगे सेठी गरम रे रहथिबे टेंट रे तो जस्ट इमेजिन all those devastating things they have been killed and they have faced the worst thing and we are just making a movie and we need if we want to do justice to those people then we need to be sincere to our work so even se video padichi YouTube re you can have a look tadhare people are saying that this is politically biased. There is no political bias about the scene that if they are showing that they are cutting one LI person in machine so tadhare kichi politics nahi they have it really happened on that place and they have shown it na sabu thare konosi political angle bi dekhiba thik no but that is if we always see political angle then that will be failure of humanity. That's very unfortunate and किछ लोग कहले कि तादरे it's not only Hindus even Muslims also died but Vivek Agnihotri gave a logic that they are still living there but the Kashmiri Pandits they have left that place 100% तांकर माने जोटा core population थिला it has reduced to 0 and 1990 was the 7th genocide ta purpuru 800 varsha bhitere it has happened many times that is very unfortunate. It's a great movie because of many reasons even san shooting re भी बहुत प्रकार माने एडिटिंग रे भी सन बहुत काम करचंती फुटेज गुडा का सेमती माने no colorful footage no song no dance nothing just story a pure story and a story about the real Kashmir that made that movie like anything हमें छुआ बेलू काश्मीर ऊपर मूवी देखि आछे कि बॉर्डर ऊपर में बहुत प्रकार वर्जन देखुचे बॉर्डर मूवी वाज वेरी सक्सेसफुल एंड गदर देयर आर मेनी मूवीज बट हमें सबू मूवी रे दैट somehow directly or indirectly touch that topic Kashmir. सनी देओल गोटे मूवी आसला माँ तुझे सलाम कि दूध मांगो तो खीर देंगे कश्मीर मांगो तो चीर देंगे गोटे डायलॉग थिला तेणु ए मूवीटा तले माने बनै से गोटे र फैक्ट को देखै सेटा को लोक डाइजेस्ट करि पारलेनी इट्स एन आउटस्टैंडिंग मूवी कि गोटे 20 crore रो मूवी 350 कोटी कलेक्शन करूची this is one of the rarest movie ever made in last in the history of Indian cinema. एटा गोटे 2004 रो कि 5 रो फोटो एटा 33 मे बी 2003 और 4 likely 4 सेटा तो ये धर्मेंद्र भाई है मोर जन सीनियर से शेयर करथिले ग्रुप आई थॉट टू शेयर इट इन पब्लिक मोन एमके मुखर्जी वाज वेरी मच फ्यूरियस ओवर द रूलिंग पार्टी देन कांग्रेस ही वाज वेरी मच फ्यूरियस सी कोटे माने बहुत उल्टा पुल्टा माने ही वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड सी रशिया जाइथिले इनक्वारी करे लगी रशिया रे तांको समान कहले कि हमको किछि न्यूज आसने तमे आसे बोलली हमको किछि अपडेट मिले तो ही डिडंट गेट ए सिंगल माने कोन तांको फाइल दियाला नेताजी फाइल दियाला से तो कमिशन एपट तुम कमिशन बसो से एपट तुम फाइल दोनो
जस्टिस एम के मुखर्जी को नेताजी जो क्लासिफाइड फाइल से गुड़ाक दिया ही नथिला से सेटा आम देपारूँ तो देपार कमिशन कहीं बस हाँ हाँ नहीं रशिया रो सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को आमे जो बही रिलीज करूछु नेशनलिस्ट एज ए डिस्पैटिव्स सेथिरे हमर जो ओडिसा रो जो पिटिशन मरा हैछि नेताजी को बाबद रे रशिया रे किछि फाइल अछि कि तेणु से चिठीटा भी आमे शो अप करेछु तेणु बही रिलीज हैला पर लोकंक द्वारा आदृत हैला हबा ऊपर नै कि कथा हो हेले से चिठीटा देखिबे ता ऊपर जदि प्रोपागंडा हैला तो तेणु नेताजी जदि किछि फाइल तो निश्चय थिबो इवन इफ रशिया रो भी गवर्नमेंट जो किछि सप्रेसिव करिथिबे इंडिया गवर्नमेंट से तो मिसी की डिस्कशन हवा उचित क्वेश्चन उठिबा उचित this is a very painful thing and only a parent can understand how painful it is. This is an old photo ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ स्वतंत्र प्रदेश ହେଲା ଗଜପତି कृष्णचंद्र भंजदेव he was Odisha's first prime minister ସେତେବେଳେ ତ prime minister ଥିଲା chief minister ନଥିଲା ଆଉ ये साइड गवर्नर जॉन ऑस्टिन हवाक I came across this photo useful. That's it for today. ठीक है धन्यवाद जय हिंद रिकैप करथले यस चलो जय हिंद जय हिंद